Hello guys, KNOCKCAT this side. So today we will solve yet another amazing problem, and the problem is pairs violating the BST property. From the past 2 days we are solving problems on BST, and this is another problem that is going to be solved keeping the property of BST in mind. So let's see the problem. It says that we are given a binary tree with n nodes, and we need to find the number of pairs violating the BST property. For the past 2 days, if you are watching my videos, I've already taught you that what is a BST. BST is like a binary tree which have at most 0, 1 or 2 nodes. And the property of BST is, let's say I am at this node, then the left children of this node are smaller than this current node, and the right children of this node, the right children of this node is larger than the current. And this property resides for all the subtree of this, all the subtree of this. That means even though if I have other nodes here also, these nodes are also going to be smaller than this node. And these two nodes, for this node would be smaller, and this node would be greater. So the same thing they are saying in this description, that every node is greater than its left child and less than its right child. So that means this node is actually greater than its left child and smaller, less than its right child. Okay, first point to this, every node is greater than the maximum value on its left subtree. The same thing I just said, that this property holds for the entire left subtree and this property holds for the entire right subtree. That this node would be the maximum, this node would be the maximum for this left subtree. But this node will be minimum for this entire right subtree, because on right, all elements would be larger than this current node. But on the left side, these all nodes going to be smaller than our, let's say, our root node. But these right nodes are going to be greater than. So second point is this. So it is valid for entire subtree. Now the third point, the maximum in the left subtree must be the less than the minimum in the right subtree. It's obvious that if this side the elements are less and if this side the elements are greater, then the maximum in the left subtree, the maximum in the left subtree would always be less than the maximum, the minimum in right subtree. Because we know now, in left subtree, the entries are lesser than root node. And if I talk about the maximum in right subtree, this value is going to be greater than this root node. And when this value is less than root node, even if I take the maximum in entire left subtree, these all values are less than my root node. So even if I take the minimum value from right, that would be this value would be larger than all of these, not the entire subtree, but also including the root node. So the maximum in the left subtree, the maximum in the left subtree, which would be like this node only, because these nodes are even smaller, would be would be minimum would be less than the minimum in the right subtree. So minimum in the right subtree would be this, because below this would be elements more greater than this element. So this is the entire problem. We just discussed what is BST, and so before coming to the example, let's come to the whiteboard again. So a binary search tree has at most 2 children. At most means ज़्यादा से ज़्यादा 2 children. A left child and a right child, and with the left child containing values less than the parent node. Left contain less than, right contain greater than. Same thing. So let's take this example only. Here is 40, so we can see 30 is less than, and here is 50. 50 is greater than 40. 30. For this 30, 25 is less than. It has to be, but on the right part, it is greater than 35. Okay. Similarly, for 50, this has to be minimum. For 50, this has to be larger. And this is 40. So this entire subtree values are should be less than 40. You can see all values are less. And if I am taking this 40, so since here
they are greater values, so this 40 would be the minimum, and all values are greater than this root node. So this is our RBST. So again, I've written simple. If this is a node, then on the smaller side, this side is small, and this side is the greater. So now the problem says we need to tell the pairs violation in BST property. So according to the definition, on the left subtree, the number of elements should be lesser than the root node, and on the right subtree, the number of elements should be greater than the root node. So can you imagine that what is that thing that will violate that property? The violation is clear that means if this is a root node, then values are not less than. And if this is a root node, if values are not greater than, then this is a violation. Consider a case, let's say I have 5 here, and let's say for 5 it has to be 3, then I have 1 here, and let's say it has to be greater than 3, but I take 6 here. But if I take 6, for this it's true, but for the left subtree, this 6 has to be less than 5. So this is a clear violation. This is a clear violation because for this entire subtree, all values should be less than 5. So 6 cannot be the case. If it was let's say 2, then it would be fine because on 3 left 1 is minimum, and on 3 right 2 is maximum. But if you look at the entire left subtree, these are all less than 5. But here when I take 6, this is a violation because they don't follow the property that on the left subtree it should be minimum. Again, let's take a case. Let's say if there was a, let's say 0. If there was 0, this is again a violation. Why? Because on the right subtree, the values should be maximum. Okay. So now come to the very first case. I think this discussion part is clear. The video would be get long because this is a good problem, and I will try to build user intuition throughout. So now let's come. Now we are coming to the problem actually. Before this, we discuss about what is BST, what is actually the violation according to this question. So 10. Now you can see 10. Value should be less than 10 on its left subtree. But here is 50. That means this 10 and 50 is a violation. Now, if I look 40, 1040 looks fine. 1020 looks fine because on the right subtree 20 is larger. 1030 is also fine because on the right it has to be larger. 40. For 40, 20 looks fine because on the left it has to be lesser values. 40 is right, 30. 30. 40's right has to be greater than. So we find another pair of pairs where it has to be 40. Another pair, 40, 30 is a violation because on the right of 40 values should be less. Now 50. 50 is at the left, but 50 like if it has to be a good case, 50 has to be the rightmost element of the subtree. 50 has to be the rightmost element of subtree. But we can see 50 is actually violating with every element. We cannot see in this diagram, but eventually, if I have to write for pairs, 50 should be in the right half of the subtree. 50 should be right half of the subtree. So I think you are getting 50 has to be in the right half of subtree because 50 is here, and we can see it is violating with 10, but eventually it is violating with 50 is violating with where 40 also, 50 is violating with 20 also, and 50 is violating with 30 also. And we can clearly see why, because if it has to be a valid BST, then 50 has to be somewhere right here. Because if it has been here, then 40 right side 50 is greater, so there is no violation. It has to be somewhere here, but it's not. That means it is a clear indication of violation. So I think that this example is clear. I'm taking only one example. And now let's come to the whiteboard. What is actually the intuition? So, this thing, for if you're like doing for the first time, this may look something new. Actually, what happens when we do an in-order traversal in our BST, it always results in a sorted array. Okay. If you don't know, like I cannot say that if you don't know that you're able to make this observation. Eventually, like if you have solved some number of problems, I would have said that this is an observation you can make. But eventually, if someone who don't know, for it's difficult to actually make this observation. So if you are getting this for the very first time, no need to worry.
in the later problems, you will take this as an observation. So what happens when we do an in-order traversal in a BST, it always resulted in a sorted array. See this example. And now don't say that you don't know in-order traversal. Okay, let's see. So what happens in in-order traversal? What we do left, root comes in the middle, and then we have our right. Okay, so this is a BST. I've already tell you. This is the same example that I have taken above here, and we know this is a BST. I'm not going to show again. So when I will write the in-order traversal, what we do left to right. So I will come to left. I will come to left again. Recursion, left again, left exists. Now left don't exist. So left don't exist. So we know we have to access root. So I will print root. 25 is printed. Now 25 is printed. I will move to right. Right don't exist. So we will come back. So we have explored the left. We have explored the left again. For this node, we came back. Now we came to root. So 30 is printed because now we have root. 30 is printed. Now we move to right. We move to right. Again, we will move to left because recursively left statement will execute first. We came to left. Okay, left explore. Then we again came to root. 35 is printed. Then we go to right. So it explore. Now it's return. It also return. So its right is also returned. So from here, left root right is also here. Now this left call was made. This left call for this node has been executed fully. So the next step was root. So 40 is now root. So 40 is printed. Again, now this entire call is written. Now for this root, its right path will get evaluated. So we came to 50. But now for 50, again recursion comes for the left. So again left exists. Yes, 45. For 45, we go to left. So nothing is there, null, return. So we come to back at 45. That means we are accessing root. 45 is printed. Now this also return back because we have explored. Now we again came to root, and this time we will at root. So we'll print that root, and after root we will move to the right. We came to right. For 60 again we will come to left because this would be the next step left. Then we will explore root again. So we came to root. We print 60. I printed 60, and again I come to right. If I came to right, then there nothing exists, it will return null. Again, this right is also explored, and we again came to here. So that's how in our traversal print. So we get 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60. So now imagine, not imagine, now like observe, this is actually sorted in increasing order. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60. This is sorted in increasing order. So when this was a valid BST, when there was no violation, this array was actually a sorted array. Okay, so it is always the case whenever there would be a BST in future also, whenever there will be going to a BST, if you write its in order traversal, it always resulted in a sorted array, and that too sorted in increasing order. Sorted and that too in increasing. Okay, so this was the case. Now this was the same example. This was the same example which we actually discussed the number of pairs for this. So now let's print this its in order traversal. Okay, let's look for its in order traversal. So again, same thing will happen. Left, root, left, root, right. So I'm at left. I'm at sorry. We start from here. So again, since left exists, I came to left. Again, I came to left for 50. Left don't exist, so I will explore root. 50 is printed. I came to right. Right don't exist. We return back. So left is being explored. It's returned. Now we came to root. We explored root. We print 10. Root has been explored. Next step is right. For this node, we came to right. When I came to 40, for 40, left exists. We came to left. 20, again, for recursive call new, we came to left. Null, it came back. We are at root. We are at root 20. Now, after root, we move to right. I will move to right. Null came, we return back. So after root, this left call went fully. We came back. Left has been executed for this node. We will explore root. 40 is printed. 40 is printed. As root is printed, its next step is explore right. We explore right. For 30, we are left. We came to left. Null is returned. We came back. We came to root now. 30 is printed. 30 is printed. Next step is right. We move to right. Nothing is there.
null is written 30. For this write got full, for this call returned, for this call is returned. So we got 50, 10, 20, 40, 30. Now I observe, since this was not a valid BST, since there was violations, this array didn't result in an increasing order. If it was a true BST, like if it was a valid BST, then with no violation, okay, I repeat, with no violation, then this array has also need to be sorted, or it has come sorted when we did the Inorder Traversal. But we can see we are getting 50, 10, 20, 20, 40, 30. So the first step is somehow you will get the Inorder Traversal. This is our very first step. So you get the Inorder Traversal 50, 10, 20, 40, 30. In this case, if it was 10, 20, 30, 40, 50, that means it was a valid BST. And you can see if it was a valid BST, then there were no, what are these violations? Okay. So now observe one thing. Now observe one thing. See this 50. This is an increasing order. See this 50. Now we can see up from 50, it has to be an increasing order, but it's not. For this 50, we can see 10 is a violation, 20 is a violation, 40 is a violation, 30 is a violation. Isn't it? 4. Okay. When I came to 10, for this 10, for this 10, 10 is right at right position, because for 10 it is less than 20, it is less than 40 also, and it is less than 30 also. For 10 we have 0. For 20, for 20 also it's fine, because 40 it's fine, for 30 also it is less. We came to 40. For 40, 30. This is a violation. Why? Because 30 has to be before 40. So 1. And now for 30, there is no elements, so that means 0. So 4 plus 1, 5. Actually, our answer was also 5. Our answer is also 5. Can you see what are actually these called? 50 is not its 50 is not in its right positions. It has to be somewhere here. So it is causing violations with these 4 elements. Okay. So we know 50 is causing violations with these 4. 10, 10 is causing violation with 50. But since 50, 10 or 10, 50 pair is already included, so we are not talking about 50. On the right, 10 is actually not taking any violation. For this 20, 20 is also having an violation with 50, but since 50, 20 pair is already been calculated in this, and 20, 40, 30 is fine. For 40, 40, 50 is a violation, but since 50, 40 pair is already calculated, 40, 30 is a violation, so 1. And for 30, there are no elements. 50, 30 is a violation, but it is already included in this. So can I say these violations are nothing? These violations are nothing but the number of inversion count. These violations are nothing but the inversion count. Now recall your fourth semester, you have your DSA or Design of Analysis of Algorithm, and you learned merge sort there. Did you solve this problem? Count number of inversions in an array. Did you solve this problem? If you have solved that problem, this is the exact thing you have to do now. These are actually nothing, but 50 is actually having inversions with this. And I don't if you don't know the definition for inversion, an inversion is defined as okay. क्लाइमेक्स मैंने पहले दे दिया मत सॉर्ट का पर कोई नहीं. The definition of inversion is like if I is less than j, if I is less than j, and r ARR of I, AR of I is greater than ARR of j. This is called an inversion. If I is less than j, if I is less than j, and r AR of I is actually greater than AR of j. You can clearly see if I write index here 0, 1, 2, 3, 4, 0 is less than 1, and AR of 0 is 50 is greater than AR of 1, which is 10. 50 is greater than 10. This is an inversion. Similarly, 0 is less than 2 and this value is greater. 0 is less than 3 and this. So if I is less than j, index basically, if we are taking two pairs, if I is less than j and AR of I is greater than AR of j, this is an inversion. And if you can clearly see, we are actually calculating inversions only. 50, you can see 50 is having violations with these 4. These are nothing inversions.
So in this problem, we just have to count the number of inversions. Since we have already retrieved this array, and now if it was a sorted array, like in 10, 20, 30, 40, 50, there would be no inversion because AR of I would be never greater than AR of J. This would never occur. You can find कोई दिख रहा है ऐसा पेयर जो कि 30 पहले हो और फिर यहाँ पे 60 हो, ऐसा है ही नहीं. 30, 40, 20, 30, आई हमेशा छोटा है तो ये छोटा ही है वैल्यूज क्योंकि सॉर्टेड है. तो अगर सॉर्टेड है तो ऐसा कोई इन्वर्जन आएगा ही नहीं. एंड इफ इट नॉट सॉर्टेड देन देयर वुड बी इन्वर्जन. और अब इन्वर्जन काउंट करने के लिए वी हैव एन एल्गोरिथम नोन एज MergeSort. You can do brute force also, but in this question that would not be what we say that efficient. So 10 raised to the power 4 again you cannot do because that would be 10 raised to the power 8. But this is actually 2 into 10 raised to the power 8. So 2 into 10 raised to the power 4 into 2 into 10 raised to the power 4 would be 10 raised to the power 8. 4 into 10 raised to the 8 operation. It is might be feasible, might not be feasible in some compilers. This would be not because actually in 1 second we can perform 1 year operation. So it is greater than this. So this not that is not feasible that you calculate this condition in n square. Although it is one of the approach. So here we will think of merge sort. So basically merge sort से हम array sort ही कर रहे होते हैं. So while sorting the array, while we make sort the array, we will count the inversions. We will also count the inversions. So let's see now merge sort. So this is the actual array 50, 10, 20, 40, 30. This is what we are getting. So in merge sort, what we do, we follow a divide and conquer approach where we divide our array. So let's say I'm at 0, I'm at 4, 0. We calculate mid first. We calculate our mid. So 0 plus 4, mid is actually low plus high by 2. So low is 0, high is 4. So 0 plus 4 by 2, we will get 2. 2 means there would be a break. There would be a break. So now I would get 50, 10, 20 as one array and 40 and 30 as one array. Okay. Now things recursion is get called. Now the same thing we applied for this array, we are going to perform for these two arrays recursively. ठीक है, जो चीज़ हमने इसके लिए करी वही चीज़ हम इसके लिए करेंगे. तो 50 and 20 indices are 0 and 2. We will calculate mid. Mid will be 0 plus 2 by 2. 2 by 2 is actually 1. So this was one index. That means the break would be here. So we get 50 and 10 in one half and 20 in another half. Okay, same thing we will do here. This is 3 and 4. Mid will be low plus high. Low is 3, 4. So 3 plus 4 is nothing but 7. And 7 by 2, if we get the floor value, it would be 3. So that means break would be here after 3. So we get 40 and we get 30. I think there should be no doubt in till now. I'm just talking about merge sort. Okay. And you all have solved merge sort. Majority, if you are not a first year student, then only that's the case that you don't know merge sort. Apart from you should be knowing. For first year, I'm telling this. Although I've moved to the coding part. Although if you don't know, like practice some problems and you will get. So like 50 and 10. Again, this was 0 index, this was 1. So low plus high is 0 plus 1. 0 plus 1 by 2 would be 1 plus by 2 is 0 only. So after 0. So this will get 50, 10. So 50 is one array, 10 is another array. Okay. So this is the half we actually got. Let's make this small. Okay. Let's make this small. Now what we will do, अब हमने डिवाइड कर दिया. अब हमें रिकर्शन हमने देखो हमने क्या करा, रिकर्सिवली जो काम हमने एक्सप्लेन करा हमने इन दो के करे, दो पार्ट बने. ये एरे दो पार्ट में डिवाइड हो गई और ये एरे भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई. ये भी एक पार्ट में डिवाइड हो गई. अब इसको डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर एक एलिमेंट है तो वो अपने आप में सॉर्टेड होता है. अगर एक एलिमेंट है तो वो अपने आप में सॉर्टेड होता है, तो वाई शुड बी डिवाइडेड. ठीक है. अब क्या करते हैं हम रिकर्सिवली इसको बिल्ड करते हैं. देखो 50 और 10 है, 50 और 10 है, तो 50 और 10 को क्या होना चाहिए? 50 और 10 को होना चाहिए 10 और 50, है ना. अब मैं इनको मर्ज करूंगा. देखो अभी डिवाइड कर दिया, वी हैव डिवाइडेड. नाउ आई विल मर्ज देम बैक. सो 10 और 50. सो नाउ 10 would have come first. 10 would have come first. Okay. That means ideally 50 is here, 10 is here. So ideally 10 would have come first and 50 is here. That means these number of inversions are there. These number of inversion would be there. So because
10 is coming prior to 50. 10 is coming prior to 50. That means if this was my mid, and this was my I, so mid minus I, mid minus I. Well, I means if this was my I and this was my mid, 10 has to appear before 10 has to appear here then 50. So mid minus I, inversions would be there. Okay, mid minus I, mid would be at this index, mid minus I inversion would be there. अगेन अभी कंफ्यूज मत हो मिड वगैरह से, वो जब कोड करेंगे तब समझ में आ जाएगा. बट समझ लो, देखो 10 और 50 है, तो क्योंकि 10 पहले से आ रहा है, तो जितने एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, जितने एलिमेंट्स वो पहले आ रहा है उतने नंबर ऑफ इन्वर्जन होंगे, है ना. तो अभी में मिल गया एक इन्वर्जन क्योंकि 1050 10 पे लाया, तो ये होगी बाइंड. अब देखो, अब 20 है, ठीक है, 40 30 को बाइंड करेंगे तो 30 और 40 होगा, और क्योंकि 30 और 40 साथ में आ रहे हैं तो एक और इन्वर्जन, क्यों 30 पहले आ रहा है और यहाँ पे एक एलिमेंट है, ठीक है. अभी मिड में सोचो, एक एलिमेंट है तो एक इन्वर्जन लगेगा लगेगा, दो होगा इन्वर्जन हमारे. अब 20 है, अब ये दोनों मर्ज होंगे. अब देखो 10 तो सही है अपनी जगह पे, हम मर्ज करेंगे. मर्ज कैसे करते हैं, देखो एक पॉइंटर यहाँ पे होता है, एक पॉइंटर यहाँ पे होता है. हम देख रहे हैं कि 10 20 से कम है, तो 10 तो पहले आएगा, ठीक है. अब क्योंकि ये 10 is less than 20, so now 10 पहले आया, now this pointer would move here, ठीक है. और 50 20 है, so 50 20 50 is actually greater than 20, and that means 20 have to come first, 20 have to come first, and that means we will get 20 here. But since I am putting 20 here, so these number of inversions, so there is one element, we get one more inversion, and now we get 20, and since now there is no more element, so 50 would be here. So we get 10 10 20 50. So now we get, and from here we are 30 40. Now we will merge these 30 40, and so again similar thing will happen. Our pointer is here, 10 is actually at right position, so there is no inversion. 20 is also at right position, there is no inversion. 30 30 would have to come before 50, 30 would have to come before 50, and there is one element before where it has to come. So again one more inversion, we get 30 here, and our pointer was here because 10 we have already, 20 already, so pointer was here. So 50 and 30 was comparing, and 30 has to come first, so 50 there was an inversion with 50, and since there are one element, if there were two elements then two inversions would be there. Okay, so assuming our mid was here, so we say mid minus I inversions. Okay, that was I was saying mid minus I, because when we do merge sort, things would be complicated for only who don't know merge sort. Again, like for others, they would be getting that when I'm saying low mid, what that happens, what that means actually means. So mid was actually this. When I break, so this was from low to mid was one half, and from mid plus one to high was another half. Similarly, here this was mid, this was mid. We can see low to mid, low से mid एक हाफ होगा और mid plus वन से दूसरा हाफ होगा. तो वही चीज़ है ये. तो यहाँ पे हमारा mid, एक्चुअली हमारा mid यहाँ पर है, ये इस एलिमेंट का हमारा मिड है, तो ये एक हाफ है ना. अब हम लो से मिड, हमने लो से मिड प्लस वन मिड का एक हाफ करा था, और मिड प्लस वन से हाई का एक हाफ करा था, एक हाफ ये करा था और एक हाफ ये करा था. तो अब हम लो से मिड तक का हाफ और मिड प्लस वन से हाई तक का हाफ मर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिड है ना मतलब, और मिड माइनस आई इन्वर्जन होंगे, तो मिड एक हाफ इतना बड़ा होगा, कितना हो सकता है, तो एक हाफ इतना बड़ा है, एक हाफ इतना बड़ा है, इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, और अगर इस एलिमेंट को यहाँ पे आना है तो इतने इन्वर्जन होंगे, ठीक है. बस और नहीं बताऊंगा मैं इसमें. तो 10 20 30, 30 को बनाना था, एक और इनमें हमने काउंट कर लिया, तो 30 और 40 पे आ गया. अब 40 और 50 कंपेयर करेंगे तो 40 को भी पहले आना चाहिए, तो 40 पहले आएगा, पर एक और इन्वर्जन काउंट, क्यों, बिकॉज 40 हैज टू कम फर्स्ट, यहाँ पे एक एलिमेंट है तो एक इन्वर्जन. 40 और 50 ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे आ चुका होगा, तो बचा 50, 50 आ गया, तो हमें मिल गई सॉर्टेड अरे, और साथ में हमारे इन्वर्जन भी 1 2 3 4 5. तो दिस इज एग्जैक्ट थिंग वी नीड टू फाइंड. इन्वर्जन फाइंड करने से हमने इन्वर्जन फाइंड कर लिए. अब ऐसा नहीं है कि इन्वर्जन हमें यहाँ मिल रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि इन्वर्जन हमें यहाँ मिल रहे होंगे, ये रिकर्सिवली आ रहे होते हैं. जब हमने ये किया था तो यहाँ से वन रिटर्न हुआ होगा, जब यहाँ से करता है यहाँ से भी वन रिटर्न हुआ होगा, ठीक है, यहाँ से भी इस कॉल से वन रिटर्न हुआ होगा. फिर जब हमने यहाँ से करा तो वन प्लस यहाँ पे दो थे, तो दो, एक वन पहला वाला एक वाला, तो दो रिटर्न होगा. यहाँ से वन आ रहा है, यहाँ से वन ऑलरेडी आ रहा है. अब जब हमने इन दोनों को मर्ज करना तो दो यहाँ फिर से आए, दो यहाँ फिर से आए, तो
2 + 2 4 और 1 आता, तो ऐसे 5 टर्न हुए। तो जब हम मर्ज कर रहे हैं ना, जब हम मर्ज कर रहे हैं तो यहाँ से लेफ्ट से जो इन्वर्जन है और जो राइट से इन्वर्जन है, लेफ्ट राइट में बेसिकली लेफ्ट हाफ से जो इन्वर्जन है, राइट हाफ से इन्वर्जन है, तो इसके लिए तो वो तुम लेफ्ट और राइट नहीं भेजोगे यहाँ पे, तो वही चीज़ है ये। तो अब इसका कोड देखते हैं। कोड तो मैंने तुम्हें बता दिया, पहला स्टेप क्या होने वाला है। देखो पहला स्टेप, टेक्स्ट, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग टेक्स्ट बॉक्स, ओके, वाइट कर देता हूँ। पहला स्टेप वही है, देखो डीएफएस, मतलब डीएफएस नहीं बोलूँगा मैं इसको, बेसिकली इनऑर्डर ट्रैवर्सल, लेकिन हम इसको इनऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं बोल सकते, तो मैं डीएफएस बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि रिजल्ट होना है वो बीएसटी होगा। अगर बीएसटी होता और इनऑर्डर ट्रैवर्सल, हाँ हमें करना है इनऑर्डर ट्रैवर्सल, ये हाँ यही बोलो, डीएफएस बोलो इनऑर्डर ट्रैवर्सल बोलो, एक ही बात है। इनऑर्डर ट्रैवर्सल बोलो तो हम करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा, है ना, वेक्टर ऑफ इन मिल जाएगा हमें, वेक्टर ऑफ इन बोलो या फिर अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर बोलो, ये हमें मिल जाएगा, मतलब हम स्टोर कर लेंगे ट्री को ट्रैवर्स करते हुए इनऑर्डर ट्रैवर्सल। अब उस इनऑर्डर ट्रैवर्स पे हमें करने काउंट इन्वर्जन, हमें करने काउंट इन्वर्जन उस इस हमारे जो वेक्टर का है, जो हमारा एयर रहेगा, इससे हमें करने काउंट इन्वर्जन, और जो इस पे नंबर ऑफ इन्वर्जन आएंगे, जो इस पे नंबर ऑफ इन्वर्जन आएंगे, दिस विल बी आवर आंसर, दिस विल बी आवर आंसर। सो दैट्स मर्ज सॉर्ट। मैंने बहुत, मुझे बताया कि मैंने मर्ज सॉर्ट इतने अच्छे से नहीं बताई, बट इवेंचुअली इफ यू नो मर्ज सॉर्ट फॉर यू, थिंग्स वुड नॉट बी गेट टफ। लाइक मैंने समझाने की कोशिश करी पूरी कि कैसे चीज़ें बिल्ड हो रही होंगी। जब कोड करेंगे तो मैं एक बार दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा। एक लास्ट पॉइंट देख लो कि बहुत, मतलब बेसिकली मर्ज सॉर्ट वही थी, मैंने पूरी बता दी है, फायदा नहीं बताने का, बट इवेंचुअली देखो लेफ्ट है राइट है और ये हमारी पूरी एरे है, तो हम मिड पॉइंट करते हैं इसका। तो अब हम पे एक हाफ ये हो गया, एक हाफ ये हो गया, ठीक है। अब रिकर्सिवली हम इसको कर रहे हैं, तो एक हाफ ऐसे आ गया, एक हाफ ऐसे आ गया, एक हाफ ऐसे आ गया, एक हाफ ऐसे आ गया इस एरे का। अब ये हमने ब्रेक कर दी, तो अब हम ब्रेक करी तो हम इनको मर्ज करते हैं। ये दो थी तो ये मिलके एक बनी, ये दो मिलके एक बन गई, ठीक है। अब ये दो मिलके, ये दो थी ना, ये दो मिलके ये बना गई, ये दो मिलके ये बन गई, ऐसे मतलब दोबारा से हमें ये पोजीशन मिल गई। जो हमने यहाँ से ये ब्रेक करे थे ना, ऐसे ब्रेक करे, तो अब मैं इन दोनों को मर्ज करा तो ऐसे बन गया, इन दोनों को मर्ज करो तो ये बन गई। अब इन दोनों का मर्ज करूंगा तो मेरे को फिर से वाली एरे मिल गई। तो ये होता है मर्ज सॉर्ट में। मैंने तुम्हें थोड़ा अलग दिखाया, मैंने ब्रेक यहाँ पे करी, मतलब एक ही बात है, मैंने ब्रेक यहाँ पे करी और मर्ज में ऐसे कर रहा था, क्योंकि ताकि ऐसा ना हो कि मैं ऊपर कर रहा हूँ फिर नीचे कर रहा हूँ देखने के लिए। तो बस ज़्यादा बातें करेंगे इस पर। दो स्टेप्स हैं, काउंट इन्वर्जन, मर्ज सॉर्ट करते हुए। तो हम लेफ्ट हाफ राइट हाफ में डिवाइड करते हैं और ऊपर आते हुए बिल्ड करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक से, एंड दैट्स ऑल। सो अब करते हैं इसका कोड, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो हमारा पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारा है गेट दी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ गिवन बीएसटी बोल रहा हूँ मैं, बीएसटी नहीं बोलेंगे, सिर्फ बीएसटी होता है, मैं गिवन ट्री बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो बीएसटी है, ठीक है। बीएसटी का होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सॉर्टेड। तो हम जो हमें ट्री मिलेगा हम उस पर निकालेंगे इन्वर्जन, ताकि पता चल जाए कितने वाले हैं। तो इन ऑर्डर लिखा मैंने, इसके लिए मैं बना रहा हूँ एक एरे, इसमें हम स्टोर करेंगे वेक्टर ऑफ इंट एरे, यू कैन टेक एरे लेस इन जावा, ठीक है। ए आर बनाया मैंने, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम रूट भेजेंगे, ए आर भेजा, द सिंपल थिंग, ठीक है। तो लिख लेता हूँ फंक्शन यहाँ पे इन ऑर्डर का, लेट्स से वॉइड इन ऑर्डर, दिख रहा होगा, थोड़ा और जूम कर दूँ, वन वर्ड, नोट स्टार रूट एंड वेक्टर ऑफ इंट एंड ऑफ ए आर, रेफरेंस क्यों पास करा, क्योंकि यार मेरे को यहाँ पे चाहिए, ऐसा ना कॉपी नहीं भेजनी है मेरे को चाहता हूँ कि एट द एंड मेरे को वेक्टर में एलिमेंट्स आ जाए। बहुत शॉर्ट लिखूंगा, अगर रूट नहीं, अगर रूट है वाला केस नहीं रखता हूँ कि अगर रूट नहीं तो रिटर्न कर दो, वो बाय डिफॉल्ट देता है वो अपने आप पे। अगर रूट है तो इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट, दैट मीन्स पहले मैं लेफ्ट को एक्सप्लोर कर लूँगा, मैं बोलूँगा लेफ्ट पे जाओ ए आर, after that I will say ar dot pushback because now I'm exploring the root element, root, root की वैल्यू क्या है यहाँ पे, data, so roots data and again after this, sorry helper नहीं होगा ये, like I have a habit of writing with helper, so it is actually in order our function, okay. So first step is actually completed in order. So here like if I tend to print this early in my in order, you will see the in order traversal of the given tree, okay, return 0 for
you will see the Inorder Traversal for our given tree. So error आ गई और ये मुझे अच्छा नहीं लगता. So it is saying unresolved overload function. Okay, sorry. ARR क्या कर रहा हूँ मैं? इनऑर्डर फंक्शन है हमारा. ओके, so 50 10 20 40 30 और अगर हम देखें 50 10 20 40 30 50 50 10 20 40 30 50 10 20 40 30 तो वही आया जो मैंने यहाँ पे बनाया था. इसकी प्रीरिक्विजिट है तुम्हें इनॉर्डर आना चाहिए, तुम्हें मर्ज आनी चाहिए, तब जाके होगा क्वेश्चन. तो ये टेक वॉक नहीं है इतना. ठीक है, तो इनऑर्डर हो गया. अब निकालना है मेरे को काउंट इन्वर्जन. तो ये निकलते हैं मर्ज सॉर्ट से. सो आई एम राइटिंग मर्ज सॉर्ट, बट बिफोर दैट our low pointer would be nothing but 0 and our high pointer would be my ar.size minus 1. ये एरे है तो लो क्या होगा? ये होगा हाई होगा. सिंपल. तो लो और हाई भेज दिया मैंने मर्ज सॉर्ट में, स्टार्टिंग फ्रॉम लो टू हाई. ऑल तो मैं ना भी लिखता, जरूरत नहीं थी इसकी, हम सिंपल लिख लेंगे यहाँ पे फ्रॉम 0 to n minus 1 विद माई ARR. और मैं एक और एरे ला रहा हूँ आउटपुट मर्ज सॉर्ट के लिए. मर्ज सॉर्ट लिख रहा हूँ बेसिकली. अब इतना समझा नहीं सकता, इससे बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ TLE आ गई थी when I was making array inside, so I got TLE, so that's why is we don't make array again and again. That's why I'm actually making this array here. Like okay, this was accepted code. Sorry. Output. Which code was that? TLE code was this. So actually, I was making output array here. I was actually making output array here. So it was creating every time this recursive function was calling. So that's why it resulted in TLE. Okay, but after that then I use this output array so that I don't need to create inside. So एक ही array रहने वाली है throughout, इसलिए तो बाहर बना रहा हूँ. Although मर्ज सॉर्ट की ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, ये समझ लो. ठीक है, और रिटर्न इससे हमें मिलेंगे इन्वर्जन. ओके, आउटपुट. सो दिस इज, इसमें होता क्या है, इसमें इन्वर्जन मतलब इसमें हमारी सॉर्टेड एरे बनती है बेसिकली. और जो हम एरे आते हैं टेम्प एरे, हम टेम्प एरे से सॉर्टेड जब हम ब्रेक पॉइंट बनाते हैं ना, तो इस एरे से हम मेन एरे में कॉपी करते हैं. तो इस एरे को मतलब इस एरे में हम चेंजेस करते हैं और फिर इस एरे में जो चंक्स आते हैं ना बन के, वो हम अपनी मेन एरे में कॉपी कर रहे होते हैं. तो हमें एक एरे चाहिए होती है. तो आउटपुट एरे अंदर बनाने से अच्छा है कि हम बाहर का एरे बनाएं. तो आउटपुट यहाँ पे बना लेता हूँ मैं पहले ही ऑफ साइज एन की. एन ठीक है, एन काफ़ी है. अब मर्ज लिखेंगे. तो मर्ज सॉर्ट इज एक सिंपल नहीं है एकदम, बट अगेन थोड़ी प्रैक्टिस से होती है. मर्ज सॉर्ट int low, int high, and we pass an array and output. Okay, so vector of int and by reference again ऐसे करना चाहिए. This also by reference. Now let's say inversions आएंगे कुछ. ठीक है, 0 वही निकाल लिया हमें. अब सिंपल चीज़ है, यहाँ पे हम बोलेंगे अगर लो लेस देन हाई है, लो लेस देन हाई है. मैंने कहा था ना कि देखो जब एक एलिमेंट होगा तो हम इसको क्यों ब्रेक करेंगे? नहीं करेंगे ना. तो अगर 3 लेस देन 4 था, यहाँ पे देखो 3 लेस देन 4 था, तो हमने ब्रेक करा. तो लो और हाई कुछ डिस्टेंस होना चाहिए ना उनके बीच में. डिस्टेंस नहीं है तो एक पॉइंट का ब्रेक करोगे तुम. इसलिए जब तक लो एंड हाई है, आई विल फाइंड मिड पॉइंट एंड मिड वुड बी नथिंग बट सिंपल लिख लेता है नो प्लस हाई बाई 2. ओके, नाउ अब क्या होता है, हम बोलते हैं लेफ्ट हाफ में. अब मैं लेफ्ट हाफ में सेम फंक्शन कॉल करूँगा रिकर्जन, जो काम इसलिए कर रहे हैं ना. यहाँ भी हम वही कर रहे थे, यहाँ डिवाइड करा हाफ, अब दोबारा मिड निकालते हैं, फिर इसको इसको डिवाइड कर रहे थे, दोबारा मिड निकाल के इसको डिवाइड कर रहे थे. सेम चीज़ वी विल डू हियर, मर्ज सॉर्ट. ठीक है, तो एक हाफ क्या होगा, एक हाफ हमारा लो से होगा मिड तक. ठीक है, AR आउटपुट. और एक हाफ क्या होगा हमारा, एक हाफ होगा हमारा फ्रॉम मिड, मिड तक एक हाफ हो गया. मिड प्लस 1 से ARR विल बी नेक्स्ट. अब ये रिकर्जन हो गए, मतलब यहाँ तक पहुँच जाएगा. ये ब्रेक्स हो गए. अब ब्रेक के बाद मर्ज तो करना है. ये ब्रेक वाला पार्ट हो गया. अब उस ब्रेक के बाद मर्ज तो करना है इन दो एरर को, है ना. ब्रेक हो गए थे, अब इनको वापस मर्ज करना है. तो अब हम बोलते हैं मर्ज करो
किसको, तो यहाँ हम भेजते हैं लो, क्योंकि लो से मिड की एक मर्ज करनी है ना, और मिड से हाई की एक मर्ज करनी होगी, क्योंकि दो हाफ है। तो यहाँ हम भेजेंगे मिड से हाई और AR और आउटपुट। और इनसे मैंने कहा था यहाँ पे कि इनसे कुछ जब आएंगे ना इन्वर्जन, तो वो ऐसे रिटर्न हो रहे होंगे, ऐसे नहीं मिल रहे होंगे एकदम से, यहाँ से रिटर्न होकर आ रहे होंगे हर कॉल। जब ये कॉल हुई तो इस कॉल का कुछ आंसर आएगा जो हमारे इन्वर्जन होंगे, तो इसलिए ये कुछ रिटर्न कर रहे होंगे। तो इन्वर्जन यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू, ये आंसर इसमें ऐड होंगे इन्वर्जन, क्योंकि ये कुछ ये फंक्शन इन टाइप का, ये कुछ रिटर्न करेगा ना, ये कुछ रिटर्न करेगा जो कैलकुलेशन आएंगी इन्वर्जन की, ये करेगा रिटर्न। सो दैट्स वाई इन्वर्जन प्लस इक्वल्स। दोबारा बताता हूँ, मैंने यहाँ पे कहा था, यहाँ तो मैंने एकदम एकदम लिखे थे, बट मैंने कहा था कि यहाँ से जब एक इन्वर्जन आया ना, तो वो रिटर्न करेगा कि हाँ कि इतने इन्वर्जन निकले, इस इन दोनों को मर्ज करने पे इतने निकले। सो वो मर्ज फंक्शन रिटर्न करेगा, और बेसिकली वही तो इनकी कॉल्स होंगी। सो इन्वर्जन एंड एट द एंड वी कैन से रिटर्न इन्वर्जन। सो ये हमारा रिकर्जन हो गया, डिवाइड हो गया। अब मर्ज करना है दोनों को, अब दोनों को मर्ज करना है मर्ज। तो हमारा लो यहाँ पर है इंटीजर हाई, मिड है हमारा, पहले मिड लेते हैं, फिर इंटीजर हाई, फिर we have our vector of int and of AR, and we have our vector of int and of output. So again यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, हमारा आई स्टार्ट होगा लो से, मर्ज करते हैं, अब हम मर्ज करते हैं, दो एरे मर्ज कर रहे हैं, तो आई लो, ये हाफ लो से मिड का है, ये हाफ मिड से हाई, मिड प्लस वन से हाई तक का है। तो लो ये है ना, लो पॉइंटर ये है, मिड यहाँ पर होगा, मिड यहाँ पर होगा, लो पॉइंटर ये है, सॉरी मिड यहाँ पे होगा ना, ये मिड प्लस वन है, लो पॉइंटर ये है, मिड यहाँ पर है। तो एक हाफ ये है लो से मिड का, और एक मिड प्लस वन से हाई तक का है, तो वही लिखेंगे। आई को मैंने लो दिया, ठीक है, क्योंकि जब मैं दो एरे को मर्ज कर रहा हूँ, तो एक एरे ये है, एक एरे ये है, ये आई है मेरा, यहाँ मेरा मिड होगा, ये मेरा जे होगा, और ये एरे की लेंथ होगी। तो इसको इसको जब मैं कंपेयर करूँगा ना, तो मैं आई और जे के से कंपेयर करूँगा, और जो मेरी डमी एरे थी ना, के वाली आउटपुट वाली, हम इसमें स्टोर कर रहे होंगे चंक्स, चंक्स नहीं, जो उनका आंसर होगा, और लास्ट में इस एरे से हमारी मेन एरे में कॉपी करते हैं। दिस इज मर्ज सॉर्ट, एंड जे वुड बी आर, जे हमारा हाई है, जे हमारा मिड प्लस वन होगा ना, एक हमारा लो से मिड तक, एक हमारा मिड प्लस वन से हाई तक, ठीक है। और के मैंने कहा था कि एक हम जो डमी एरे हमारी आउटपुट वाली, इसमें हम कॉपी कर रहे होंगे, मतलब उसमें हम जो आंसर आ रहे होंगे ना एरेज, मतलब जो हम एरेज के हाफ सॉर्टेड बनाएंगे, वो हम आउटपुट में शो कर रहे होंगे उस ऑर्डर में जैसे चाहिए। तो वो भी लो से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि लो से हाई तक की एरे ट्रीट कर रहे हैं हम बेसिकली। अगर ये एक हाफ है लो से मिड तक का, और ये एक हाफ है मिड प्लस वन से हाई तक का, तो हम इतने हाफ को कर रहे हैं, हम इतने हाफ को मर्ज कर रहे हैं, तो नहीं से इतने में तो करेंगे हम, तो हमारा के लो ही तो होगा, ठीक है। तो अब बस सिंपल है, अब अगर आई लेस देन इक्वल्स टू मिड है एंड जे इज लेस देन इक्वल्स टू आर हाई, the same condition I was telling there, that if AR of I is less than equals to AR of J, if they are already fine, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा अगर 50 और 10 में, ये 50 और 10 में फाइन था, तो हम क्या बोल रहे थे, 50 पहले आएगा फिर 10 आएगा, लेकिन अगर 50 10 में फाइन है, 10 पहले आएगा 50 पहले आएगा। तो अभी हम वो केस है कि जब ऐसा है, जब 10 और 20 है, तो 10 और 20 सेम है, तो 10 को रखूंगा मैं। तो आउटपुट ऑफ के में क्या आएगा, ए आर ऑफ आई, प्लस प्लस कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंटर अगले, हमें अगले पॉइंटर जाना है, इसको भी के प्लस प्लस, क्योंकि इसको भी इंक्रीज करना है। एल्स अब वो केस है कि जब इन्वर्जन आएंगे, तो इन्वर्जन आएंगे, तो मतलब दूसरे हाफ की, दूसरे एक हाफ ये है, क्या हो गया, तो एक हाफ ये है और एक हाफ ये है। अभी था कि इस हाफ की वैल्यू, तो इस हाफ की वैल्यू ही रखी हमने यहाँ पे, और इसको मूव कर दिया। अब है कि इस हाफ की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, तो इतने इन्वर्जन होंगे, और इस वैल्यू को यहाँ पे लाएंगे, मतलब इस वैल्यू को सेकंड प्लेस होना चाहिए। तो वही करा, आउटपुट आउटपुट ऑफ k प्लस प्लस वुड बी AR ऑफ j प्लस प्लस। अब डरना मतलब पोस्ट प्री इंक्रीमेंट से, बेसिकली अगर मैं ये ना लिखता ना, तो मैं बाद में बोलता, मैं इसके बाद बोलता प्लस प्लस आई कर दो और प्लस प्लस के कर दो, ये वही चीज़ है बेसिकली, मैंने यहीं पे कर दिया ताकि थोड़ा कोड क्लीन दिखे, ठीक है। अब ये हमने रख दिया, अब इन्वर्जन देख लेंगे, इन्वर्जन कितने होंगे, मैंने कहा था पहले, ये हाफ है, ये हाफ है, हमारा मिड यहाँ पर है, अगर इसको यहाँ पे आना चाहिए, अगर इसको वन पे आना है, तो इस एलिमेंट के लिए ये पूरा इन्वर्जन है,
तो मिड माइनस आई, ये इतने पूरे इन्वर्जन करेंगे। तो इंटीजर इन्वर्जन इज इक्वल टू 0, इन्वर्जन प्लस इज इक्वल टू मिड माइनस आई, और प्लस 1 होगा, प्लस 1 भी होगा। देखते हैं कैसे। लेट से 0 1 2 3 है और 4 5 6 है। तो मान लो हमने ये रखेगा, हमने अब हम इसको हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे। तो मान लो इसको आना चाहिए यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे आना चाहिए, मतलब ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू इससे पहले आनी चाहिए, मतलब 0 के बाद आनी चाहिए। तो कितने इन्वर्जन होंगे? एक इन्वर्जन, दो इन्वर्जन, तीन इन्वर्जन। तो हम आई पे हैं, तो मिड माइनस आई, 3 माइनस 1 2 हो रहा है, लेकिन इन्वर्जन कितने हैं? 1 2 3, तो 3 माइनस 1 2 प्लस 1, मिड माइनस आई प्लस 1, तो इतने होंगे इन्वर्जन। ये हो गए, ये हो गया जब हमारे एरे एलिमेंट ऐसे थे, बराबर लेंथ के थे। अब मान लो एक एक हाफ इतना है, एक हाफ इतना है, तो कुछ एलिमेंट्स तो कंपनसेट हो गए, लेकिन एक हाफ पे कुछ बचे होंगे। मर्ज सॉर्ट का लॉजिक है बेसिकली। अगर तुमने वाला क्वेश्चन करा है मर्ज टू एरेज, दिस इज एग्जैक्ट द सेम थिंग। लीड कोड में दिखा भी देता हूँ तुम्हें। लीड कोड मर्ज सॉलिड एरे, यही क्वेश्चन है बेसिकली, मर्ज सॉर्टेड एरे, मर्ज सॉर्टेड एरे, हाँ यही क्वेश्चन है। तो जिसका लॉजिक दिखाऊंगा अगर तुम्हें मैं, सेम थिंग। ये देखो, वही चीज़ कर रहे हैं बेसिकली। अब देखो एक हाफ जब हो गए होंगे, अगर एरे सेम लेंथ के थे तब तो सही हो गया, तब तो एकदम आगे होंगे। लेकिन अगर अनइक्वल हाफ के हैं तो हो सकता एक एरे का तो एक हाफ बच होगा ना, इतना हाफ, तो रिमेनिंग हाफ इसका भी हो सकता है, वो रिमेनिंग हाफ इसका भी हो सकता है। ठीक है, देख लेना इसका क्वेश्चन। अब डिफिकल्टी वुड बी फॉर दोज ओनली लाइक हु डोंट नो मर्ज सॉर्ट एक्चुअली, बिकॉज हु नोज मर्ज सॉर्ट फॉर देम दिस इज केक वॉक। कोई नहीं, आता नहीं आती पढ़ना। ठीक है, वाइल तो हो गया। अब ये तो हो गया कि कंपनसेट, अब एक हाफ बच गया होगा। तो वाइल आई लेस देन इक्वल टू मिड, क्योंकि आई से मिड तक का एक हाफ है, तो आउटपुट ऑफ के प्लस प्लस इज इक्वल टू ए आर ऑफ आई प्लस प्लस, और वाइल जे लेस देन इक्वल टू हाई, सो आउटपुट ऑफ के प्लस प्लस। इन दोनों से कोई या तो आई वाला हाफ बच गया होगा या जे वाला हाफ, या तो इतना पार्ट बच जाएगा या फिर दूसरे हाफ का इतना पार्ट बच जाएगा। तो जे से हाई वाला पार्ट या फिर आई से मिड वाला पार्ट, आउट ऑफ के प्लस इक्वल टू ए आर ऑफ जे प्लस प्लस। क्या हो गया? ए आर ऑफ जे प्लस प्लस। सो दिस इज इतना कर लिया हमने, इन्वर्जन काउंट कर लिए, मर्ज कर लिया, और लास्ट में आने का था ना जो डमी एरे होती है, फ्रॉम लो से हम लो से आई इक्वल्स टू, लो से आई लेस देन इक्वल्स टू हाई तक कर रहे होते हैं कुछ भी। और अब हमारी मेन एरे में हम डमी एरे होती है जो हमारी आउटपुट वाली, वो डाल देते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें इस एरे को सॉर्ट करना होता है ना, बस। ए आर ऑफ आई इक्वल्स टू आउटपुट ऑफ आई, और यहाँ से हमें कुछ आंसर आया होगा, रिटर्न इन्वर्जन। सो अब ये इन्वर्जन आए थे, तो ये जब ये कॉल हुई थी तो इसको कुछ मिला होगा, जिसने ये कॉल करी इसको मिला होगा, लास्ट में मर्ज करके ये, इससे हम तीनों प्लस करते हैं। तो दिस इज एंटायर क्वेश्चन। होपफुली कुछ गलती ना करी हो, लेट्स सी। सो ओके, merge sort mid plus 1 AR of output, merge sort mid plus 1 till high, till high, एक हाफ लो से मिड, एक हाफ मिड प्लस 1 से हाई तक। और कोई एरर अभी लिख रही है? So we are getting 5 and 5. Let's submit this. Maybe don't get fail in some case. वैसे मैं क्वेश्चन पहले कर लेता हूँ ताकि बीच में कोई दिक्कत ना हो। तो लाइक क्लियरली आ गई थी यहाँ पे, मैंने बताया था तुम्हें, क्योंकि वो आउटपुट एरे मैंने अंदर बनाई थी, सो दैट्स वाई वी मेक आउटपुट एरे आउट। सो दिस इज एंटायर कोड। अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो अगर हम बात करें इस इनऑर्डर फंक्शन की, तो ये ऑर्डर ऑफ एन होगी, क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन नोड्स को प्रोसेस कर रहा होगा। मर्ज सॉर्ट की जो डिवाइड का लॉजिक होता है ना, डिवाइड, जो डिवाइड का लॉजिक होता है, तुम डिवाइड कर रहे हो, तो ये कितने कितने डिवीजन होंगे? 4 का 2 हुआ, 2 के 1 1 के होंगे, तो ये लॉग ना, लॉग टाइम नहीं हो रहा है डिवीजन। तो ये एन, और क्योंकि एन एलिमेंट्स, बाद में हम एन एलिमेंट्स को मर्ज कर रहे होते हैं और ये डिवीजन लॉग हो रहे हैं। ये रिकर्सिव कॉल्स लॉग एन, लॉग ऑफ एन कॉल्स होती है।
log of n कॉल्स होती हैं एंड मर्ज सॉर्ट, तो n एलिमेंट्स को मर्ज करना ही है। तो इवेंचुअली ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है मर्ज सॉर्ट की वो होती है ऑर्डर ऑफ n log n। सो order of n log n calls or merge function overall, so it brings n log n, और वो थी order of n in order लिखने की। so overall time complexity हम बोले तो order of n log n ही होगी। so if I write time complexity, it will be nothing but order of n into log of n, and space complexity also would be order of 2n है। बेसिकली मैंने एक एरे क्या एक एरे एक आउटपुट एरे है, और प्लस log n भी होगी, प्लस log of n भी होगी, और ये होगी ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस, ये log n, क्योंकि जो रिकर्सिव कॉल्स हो रही है कहीं स्टैक में तो होंगी ना, तो log of n है, बता रहा हूँ मैं फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और 2n क्यू एक आउटपुट आ रहा है एक ए आ रहा है, so, अभी शायद हो, बट ये अंडरस्टैंडिंग पे था बस। log n रिकर्सिव कॉल स्टैक में भी होगी, तो ऑर्डर 2n है, तो एज ऑर्डर ऑफ n लिखते हैं। सो n log n ऑर्डर ऑफ n, और वही है ऑर्डर ऑफ n में हमें वही दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोड। आई होप यू गेट टू लर्न समथिंग। BST की वही इंट्यूशन थी कि जो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है इट रिजल्ट इन एन सॉर्टेड एरे, और वो सॉर्टेड एरे होगा, मैंने दिखाया कि सॉर्टेड नहीं है तो जो वायलेशंस हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्वर्जन आ रहे हैं। मैंने बताया कि इन्वर्जन की डेफिनेशन क्या होती है और इसलिए हमें क्यों इन्वर्जन निकालने हैं। इन्वर्जन निकालने के लिए हम मर्ज सॉर्ट यूज करते हैं। यू कैन डू इन एन स्क्वायर बट देन इट इज नॉट विजिबल। सो इन्वर्जन की अप्रोच है ये मर्ज सॉर्ट। ऑफलाइन क्वेरीज भी होती है पर छोड़ो से, मतलब बेसिकली मर्ज सॉर्ट। सो दैट्स व्हाई बॉइल डाउन टू n log n। सो इस क्वेश्चन की प्री रिक्विजिट थी, मैंने पहले बताई थी। अगर अभी तुम्हें डाउट हो रहा है ना इस क्वेश्चन में, तो मैं लास्ट में फिर से बता रहा हूँ। प्री रिक्विजिट देखो इसकी क्या है, पहले तो तुम्हें ट्रैवर्सल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम इनऑर्डर यूज कर रहे हैं, सो इनऑर्डर ट्रैवर्सल। तुम्हें आनी चाहिए मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, और मर्ज सॉर्ट आने के लिए भी दो प्रीवियस एक प्री रिक्विजिट है, तो आना चाहिए रिकर्जन। तो दिस क्वेश्चन हैज अ लॉट ऑफ प्री रिक्विजिट, सो दैट्स ऑल। सो करो, हो जाएगा धीरे धीरे, and I hope you get to understand this question. Seems lengthy, but it actually should just boil down the in order traversal the array you get and count the number of inversions through it. So I will attach this same code in the GitHub description, and if you understand the video, you can comment helpful. That would be enough for me. So that's all, and KNOCKCAT this side.